Find dy by dx if y is equal to 4x cube plus 3x square minus 2x, the whole thing raised to 6. Now if we observe, ये जो term है right hand side पे, this is of the form x raised to n. लेकिन x की जगह पर यहाँ पर एक function दिया हुआ है. So basically this is of the form f of x raised to n. So instead of x raised to n, it is a function raised to n, and derivative of fx raised to n होता है, जैसे इसका फॉर्मूला है सेम वैसा ही फॉर्मूला इसका भी आएगा. So this will be n times fx raised to n minus 1 into derivative of fx. So this is called the chain rule. तो फॉर्मूला वही रहेगा x raised to n फॉर्म का, लेकिन instead of x we have a function fx, इसलिए आगे हम उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन करते हैं. So ये है हमारा fx और ये है n is 6 over here. So differentiating with respect to x, हमें मिलेगा dy by dx is equal to, पहले आएगा n यानी 6 into fx is 4x cube plus 3x square minus 2 raised to n minus 1 यानी 6 minus 1 that is 5 into derivative of fx यानी ये वाला term, that is derivative of 4x cube plus 3x square minus 2x. यहाँ पर भी x आएगा, तो ये पार्ट तो as it is रहेगा. 6 times 4x cube plus 3x square minus 2x raised to 5. अब ये तीन टर्म्स का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आएगा 4 इंटू, अब x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x minus 2 times derivative of x is 1. So finally we have 6 into 4x cube plus 3x square minus 2x, the whole thing raised to 5 into, now 4 3s ये हो जाएगा 12x square plus 3 2s are, so that's 6x minus 2. So this is the value for dy by dx.